मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। जो दो राजनयिकों की जो मुलाकात हुई है, इंडियन ऑफिशियल और मालदीव के ऑफिशियल की, इससे यह है कि रिलेशन थोड़े टेंशन, जो गुस्सा और ये सब था, उसमें आने वाले समय में कमी पूरी होगी। दूसरी बात यह है कि मोइजो ने जो बात कही कि धमकाया नहीं जा सकता, भारत किसी को धमकाता नहीं, भारत की ये नीति ही नहीं है, आज से नहीं हजारों साल से। और ये भारत चाहता है कि सभी देशों से उसके अच्छे संबंध हो। भारत की पॉलिसी ये है कि नेबरहुड फर्स्ट की है, और मालदीव हमारा बहुत पुराना मित्र देश है। भारत चाहता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। भारत साथ में ये भी नहीं चाहता कि वहाँ पे किसी दूसरी कंट्री का मिलिट्री बेस बने या वहाँ पे इस तरह एंटी इंडिया एक्टिविटी का वो सेंटर बने उस देश में। और ये मालदीव को ये बात समझनी चाहिए, भारत के जो कंसर्न्स हैं उनको करना पड़ेगा पूरा, उनको पर ध्यान देना पड़ेगा पूरा। और मैं समझता हूँ कि मालदीव को बगैर भारत के मालदीव में प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाएगी। बड़े मूल में भारतीय लोग वहाँ जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स भी भारत के चल रहे हैं, और भारत के समर्थन में वहाँ बहुत लोग हैं। चाइना को अब, चाइना ने जो कुछ किया श्रीलंका में या पाकिस्तान में, जिस तरह से उन्हीं ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या चाइना पाकिस्तान ने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसको सब जानते हैं कि उससे न तो पाकिस्तान का फायदा हुआ, न चाइना का, न श्रीलंका का, केवल फायदा हुआ तो किसी का चाइना का हुआ है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से वहाँ की आम जनता भी नहीं चाहती। भारत का वहाँ पे बहुत समर्थन है, भारत ने हमेशा खुल के उनकी मदद की है जब उनके यहाँ क्राइसिस आई है, चाहे पानी की क्राइसिस हो या उससे पहले 80s में जब वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व और कुछ सो कॉल्ड रिवोल्यूशनरीज ने कोशिश की थी सत्ता पर कब्जा करने की, भारत ने मदद भेजी थी। और भारत आज भी चाहेगा कि मालदीव से उसके रिश्ते बने रहें। ये अच्छा है कि बातचीत का दौर कम से कम शुरू हुआ है, और मालदीव के प्रेसिडेंट भला चाहें चाइना से जोड़ना या जो भी करना, भारत चाइना के खिलाफ नहीं कि वहां पे प्रोजेक्ट आए, लेकिन भारत ये नहीं चाहता कि इन प्रोजेक्ट के पीछे चाइना भारत एंटी इंडिया एक्टिविटी हो। डीप सी पोर्ट पे जैसे कि वो बॉर्डर पे बना रहे हैं, नेवल बेस बना रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत को जो चारों तरफ से घेरने की जो उनकी नीति है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, वो ये भारत को मंजूर नहीं होगा। सर, इस बीच को आप कैसे देखते? राजनीति है, ये सही बात है, और हर देश समर्थन भी नहीं करता। हमारे कुछ देश हैं जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो या इस तरह के कोई भी हो, इनको जब भी मौका मिलता है भारत के विरुद्ध काम करने का, या भारत यूनाइटेड नेशंस में जब भी हमने कोशिश की कि आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 1267 कमेटी है उसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों को आतंकवादी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की चाइना ने हमेशा उसको स्कटल किया, उस मूव को किया। हम लोग, भारत जानता है अच्छी तरीके से, जयशंकर साहब ने जो बात कही है वो बात सही है कि हर मुल्क नहीं हो सकता समर्थक, लेकिन भारत की कोशिश ये होती है कि सभी मुल्क से अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। हालांकि चीन के संबंध में जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी उसमें उन्होंने जिक्र किया नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब तक कि ये उनका सीमा के ऊपर वो बैठे हुए हैं, और भारत की जो अभी उन्हीं ने रिसेंट पीरियड में जो जमीनों पर कब्जा किया है उससे जब तक नहीं हटेंगे तो मैं नहीं समझता कि सामान्य स्थिति। और इसी तरह की ये भी है कि पाकिस्तान से जब तक आतंकवाद आ रहा है तब तक पाकिस्तान से मुझे नहीं लगता कि सामान्य माहौल बने या सामान्य स्थिति जब तक नहीं होगी तो वहां से भी रिश्ते का बनना मुश्किल नजर आता है। Sir, how you see the officials from India? You see the meeting of official between India and Maldives in Malé? I think it's a positive step. It will help cool down the temper build up in the last couple of weeks. In fact, Malé is an important country for India, and India is very equally important. In fact, more important for Malé, and the people of Malé, have a lot of respect and regard for India because India has been supporting
the developmental activity in Malay, and India is the one country, which genuinely believes in development of that country. India's, whatever the projects we are supporting or we have given, working on Malay, they are helpful to the local people, local population. We have very strong people-to-people ties as well as with the government, and a big population of Malay supports India. They want India because they know what China has done in Sri Lanka or what they are doing in Pakistan. They don't want Malay to become this country totally aligning itself with China and become a Chinese military, or Malay award them Chinese military base in that country. So that is not acceptable. And ever since Moizo came to power, he's talking about China. He went to China. He talked about bringing projects. He expelled he was the one who started demanding, even before getting elected, that Indian troops should go back to India. These troops are helping Malay. These troops were involved in protecting Malay, from outside interference or shipping lanes, protecting the shipping lanes passing through the Malay. Malay is very important for us also. We want to continue to have better ties with that country. President comes and goes, but the country remains there, and the people of Malay also wants ties with India. We will not accept, the Malay becomes a, totally, or becomes the part of Chinese design against India. China policy is to encircle India. The policy that is called, a string of pearls, building big deep sea ports all over around India, encircling India. They're trying to build one in Sri Lanka, deep sea port. They've already, Hambantota, they have built, and they are running it now. Secondly, Malay, they have been trying for a very long time. Then in Pakistan, Gwadar port, they have built, And in Bangladesh, Chittagong, they are trying, similar, some sort of military setup over there. And Bhutan and Burma also, which is, they are also trying similar, some sort of military facilities, at least, if not based there. So India will not accept this, its encirclement. India will resist all these things, Chinese moves. Sir, how do you see the visit of Maldives President to China and the remarks? It's a very childish, Nobody is, bullish Sri Lanka. We don't want, we want good relations. We have people ties with that country. We have centuries-old relations with Malay. We want peace and development in that country. We have always helped Malay. This type of statements are creating problem between the two countries. President Moizo has the problem with him. He is promoting anti-India sentiments in Malay. Even during the election campaign, he talked about presence of Indian military in that country. This in fact, this facility was helping Malay, not India. So that sort of a language he was using ever since. His game plan is to bring China over there. And we know that with China, China always brings Pakistan in the back also. We have already seen a lot of Islamic madrasas are open over there, and some of them are very extremist ideologies are being promoted through these madrasas. This is what Pakistan is doing. So that is in the long run or near future, we see as a threat to India and to the region as well, because we are opposed to such ideology which promotes hatred anywhere in the world. So on India, Maldives country will support us.
Yeah, that is true that every country doesn't support everyone, you know. But India is a big country. Our effort is to make good relation with all the countries. And Prime Minister has a policy of neighborhood first, you know. He gives a lot of emphasis on this region, and his main concern is, you know, that region should also develop with India as India is developing. And secondly, yes, we have problem with Pakistan, we have problem with China, you know, these are the countries we have, you know. But most of the countries are pro-India, they are supporting India and maintaining good relation with India. On China, Jaishankar has also said... Of course, you know, India will never accept, you know, as long as they are occupying our territory, particularly the recent past, you know, India will not, ties will not be normalized, you know. Of course, we have a tie, we have a trade relations with them, we still have our embassy over there, but, you know, the friendship, which we call it, you know, is not possible, you know. Warm relation between the two countries will not be there as long. And similarly, you know, with Pakistan also, India's policy is, you know, as long as they are promoting militancy and supporting terrorism in Jammu and Kashmir or other part of the country, a relation will not be normalized with Pakistan either.